हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे HPCL 2026 के जो रिक्रूटमेंट है सिविल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक 18 रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, सिविल के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। 22 चैप्टर, 270 यूनिट्स एंड 7000 प्लस एमसीक्यूज। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिपेयर्स एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिमोलिश स्ट्रक्चर, सेकंड रिस्टोर स्ट्रेंथ एंड सर्विसबिलिटी, थर्ड इंक्रीज हाइट एंड फोर्थ चेंज डिजाइन। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड restore strength and serviceability because repair aim to bring structure back to safe and unusable condition. Next, second, which of the most common cause of deterioration in RCC structure? So the option is first cement, second high strength, third steel corrosion and fourth low load. So correct answer is third steel corrosion because corrosion of enforcement lead to cracking and spalling. Next, third, spalling of concrete is mainly due to. So the option is first excess curring, second steel corrosion, third low temperature and fourth proper design. तो correct answer है second steel corrosion. ठीक है, rust expansion cause concrete cover to break off. Next, third, carbonation in concrete leads to. So the option is first decrease in pH, second increase in pH, third increase strength and fourth no effect. So correct answer is first decrease in pH because CO2 reduce alkalinity making steel valuable to corrosion. Next, fifth, epoxy injection is used for. So the option is first a large crack, second structural crack repair, third soil stabilization and fourth waterproofing only. So correct answer is second structural crack repair because it restores structural integrity of cracked concrete. Next, sixth, shotcrete is applied by. So the option is first pouring, hand mixing, spraying under pressure and vibrating. So correct answer is third spraying under pressure because concrete or mortar is pneumatically projected. Next, seventh, grouting is used to. So the option is first remove crack, second fill void and crack, third increase load and fourth reduce thickness. So correct answer is second fill voids and crack because it fill gap and improve strength. Next, 8, jacketing method involved. So the option is first removing structure, reducing section, adding new layer around member and painting. So correct answer is third adding new layer around member because it increase load carrying capacity. Next, ninth, steel jacketing improve. So the option is first appearance, straight and confinement, color and weight reduction. So correct answer is second strength and confinement because it enhance load capacity and ductility. Next, 10, FRP wrapping is used for. So the option is first strengthening, decoration, waterproofing only and insulation. So correct answer is first strengthening. FRP means fiber reinforced polymer. Okay, is increased strength and durability. नेक्स्ट, वैसे देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, 11, कोरेशन इनहिबिटर आर यूज्ड टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज कोरेशन, सेकंड रिड्यूस कोरेशन, थर्ड इंक्रीज वेट एंड फोर्थ चेंज कलर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रिड्यूस कोरेशन बिकॉज दे स्लो डाउन स्टील कोरेशन। Next, 12, rebar corrosion is mainly caused by. The option is first high humidity, high strain, chloride attack and dry condition. So correct answer is third chloride attack. Okay, because chloride break protective layer on steel. Next, 13, half cell potential test is used to detect. So the option is first strength, corrosion activity, density, moisture. So correct answer is second corrosion activity because it assesses probability of corrosion in reinforcement.
नेक्स्ट 14 अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी इज यूज्ड फॉर, देखो ऑप्शन है फर्स्ट कलर, वेट, टेम्परेचर, इंटरनल डिफेक्ट। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ इंटरनल डिफेक्ट बिकॉज इट डिटेक्ट क्रैक एंड वॉइड इनसाइड कॉन्क्रीट। नेक्स्ट 15 रेट्रोफिटिंग मीन्स, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिमोलिशन, सेकंड स्ट्रेथनिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, थर्ड पेंटिंग एंड फोर्थ क्लीनिंग। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड सेकंड स्ट्रेथनिंग एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बिकॉज इट इंप्रूव स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट 16 अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन मीन्स डबल AR कॉज, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपांशन एंड क्रैकिंग, सेकंड श्रिंकेज, थर्ड स्ट्रेथ अगेन एंड फोर्थ ड्राइंग। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट expansion and cracking because chemical reaction cause expansion and crack. Next 17 waterproofing is mainly done to, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट increase weight, second prevent water ingress, third reduce strength and fourth increase crack। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड prevent water ingress because it protects structure from moisture damage। नेक्स्ट 18 यूनिटिंग इज सिमिलर टू, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पेंटिंग, ग्राउटिंग, शॉर्ट क्रिएट एंड प्लास्टरिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड शॉर्ट क्रिएट बिकॉज बोथ इन्वॉल्व स्प्रेइंग मोर्टर एंड कॉन्क्रीट। नेक्स्ट 19 द बेस्ट मेथड टू रिपेयर वाइड क्रैक इज, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सरफेस कोटिंग, एपॉक्सी इंजेक्शन, ग्राउटिंग एंड व्हाइट वॉशिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड grouting because grouting is suitable for large crack and voids। Next 20 structural health monitoring helps in, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट increase cost, continuous assessment of condition, reducing strength and demolition। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड continuous assessment of condition because it track performance and detect issue early। ओके वैसे देखिए सिविल के लिए PDF नोट्स अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है एंड इंग्लिश ग्रामर। जिनको भी PDF चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।